परस्तात् संवत्सरेणमृतज्ञ स्वस्ति यज्ञन्नः पान्तु वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिसंविशाम मानो अरातिरगशगुंसागन् क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागुंशतभिषड्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः शतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्तो राजा वरुण उपयातु शुक्लांबरधरं विष्णुं त्रिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्वक्त्राद्या पारिशुद्ध्या परशतं विघ्नं निघ्नं सततं विश्वक्षुन्दमाश्रये हरिवरों तत्सत् श्री गोविंद गोविंद गोविन्दः अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य प्रक्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरहार्थे हिरण्यकवर्षे गोतीर्थखण्डे सप्तकुलजलायते सप्तरस्य परिवृते ऊनशताब्द्योत्तरे दिग्भाग्यास्मिन् वर्तमाने व्यवहारिकां प्रभाष्टमत्सराणामध्ये श्रीमते शोभनामकृतसंवत्सरे दक्षिणाय उत्तरायणे हेमन्तऋतु पुष्यमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां गुरुवासरयुक्त सौम्यवासरयुक्तायां श्री शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गण विशेषण शिष्टायाम् अस्यां सोपादितो अस्मिन् सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्मुखेन आचरिष्ये सेवा कर्तॄणां गोत्रोद्भवस्य कृष्णगोत्रोद्भवस्य राहुलोर्यानां देस्य रूपमानाम्न्याः गौरव शर्मणां देस्य आशीषनां देस्य सारानाम्न्याः श्रीमान सुगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य गोलगोत्रोद्भवस्य प्रेमनारायण गुप्ता नाम देस्य रमानारायण गुप्ता नाम देस्य अमित नारायण गुप्ता नाम देस्य सुमित नारायण गुप्ता नाम देस्य प्रिया नारायण गुप्ता नाम कुटुंबवर्गानां क्षमत्रियारार्गस्वाभ्यर्थम श्रीमान श्याम कौशल काश्यप सगोत्रोद्भवस्य पराग पांडे शर्मन नाम देस्य सुति पांड्या नाम देस्य राधा पांडे नाम्न्याः मीरा पांडे नाम्न्याः पूर्णिमा पांडे नाम्न्याः सकुटुम्बानां क्षत्रियारार्गस्वाभ्यर्थम श्रीमान सगोत्रोद्भवस्य गोत्र काश्यप गोत्रोद्भवस्य मधु नाम देस्य धर्मज्ञाः मोना नाम्न्याः सुपुत्रिकानां बेटी महिमा नाम्न्याः विवेका नाम्न्याः हरि नाम देस्य कुटुम्बानां क्षत्रियारार्गस्वाभ्यर्थम परमेश्वरीत्यर्थमानस्यां श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगरिष्य दोष्म करिष्यामि श्रीमान सुगोत्रोद्भवस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रजातस्य जानस्य लक्ष्मी नाम्न्याः सकुटुम्बानां क्षत्रियवीर्यारार्गस्वाभ्यर्थम श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्मुखेन आचरिष्ये
कृतोष्म करिष्यामि अस्य जमानस्यां गोत्रोद्भवस्यां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य शेषाद् प्रतिवादिशर्मणां तिरुमत्न्याः मल्लिका प्रतिवादीनाम्न्याः सुपुत्रिकान् श्रद्धा रामानुदासन्नाम्न्याः यशस्विनीनां कुटुम्बानां क्षत्रियारार्गश्राव्यर्थं श्रीमानसगोत्रोद्भवस्य यशस्विनीनाम्न्या सकुटुम्बानां क्षत्रियारार्गश्राव्यर्थं सत्यनारायणसंकल्पपूजाङ्गाचार्मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि। बोल दिया जी। कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदा नः शृण्वन्नो दिवः सीदसादनम् पादयोपाद्यम् समर्पयामि हस्तयोर्घ्यम् समर्पयामि मुखे आचमनीयम् जलम् समर्पयामि आपोहिष्ठामयो भुवस्तानौ ऊर्जे ददातना मैरणाय चक्षसे यो वश्यवतमो रजस्तस्य वाजयते अनः औषधीरिव मातर तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयधा जनः गन्धद्वारान्दरादर्शाम् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरीगुम् दर्भभूतानाम् दामिहोपव्वये श्रियम् श्री गन्धाय नमः कपिल गजाननाय नमः समर्पयामि दशाङ्गम् गुग्गुलोधूपम् दुगन्धम् दुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानाम् धूपोऽयम् प्रतिगृह्यता उद्दीप्य जातवेदो भग्नन्निर्धिर्मम पशोकश्च मय्यमावह जीवनम् च दिशो दिशा वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तथास्तु। ॐ सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च पश्यन्नादिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः आप्यायस्व समेदुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते सोमाय नमः अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेदागुं जिन्वति अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते भौमाय नमः उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येन मिष्टापूर्ते सकुन्द्रजेधामयम् च पुनः कृण्वग्गस्त्वा पितरय्यवानमन्वादागुं सेत्त्वयिदन्तुमेतम् बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाधिक्रतुमज्जनेशो यद्दीत यच्छवजर्त प्रजा तदस्मासुद्रविणम् देहि चित्रम् इन्द्रं वो विश्वतस्पर्यवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः शन्नो देवीरविष्टया वो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः
कया नश्चित्रा भवदोदे सदा व्रतः सखा कया सतिष्ठया व्रता केतुं गृण्वन्न केतवे भेषो मर्या भेषजे शमुषद्भिरजायथाः देवताभ्यो नमः पादयो पाद्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि आबोहिष्ठामयो भवस्नानौर्जे ददादन मैरणाय चक्षसे यो वश्यपतमोरसस्तस्य भाजयते हनः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वदा भोजनयधाचनः नमः ॐ नमः चन्द्राय नमः ॐ बुधाय नमः ॐ शुक्राय नमः ॐ राहवे नमः आदित्यसहितसमस्तनवग्रहदेवताभ्यो नमः दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेषणीमीश्वरे कुन्दर्पबोधानां दाम्योपव्यये श्रियम् कल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते दशाङ्गं गुग्गुलोदोपं दुगन्धं दुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां दोपोऽयं प्रतिगृह्यताम् उद्दीप्यस्य जातवेदो भग्नन्निर्हृतिर्मम पशुकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मंगलाय बुधाय च गुरुश्च शुक्रश्च शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः पूजानि समर्पयामि अस्तु ॐ ध्यायेत् गुणातीतं गुणत्रयः समन्वितं जगोद्देशं कौस्तुभम् आवरणं हरिं नीलवर्णं अग्रपूजितं गोविन्दं गोकुलानन्दं रसपूजितं शान्ताकारं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं जवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम् सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अथ द्वारपालक पूजा पूरद्वारे द्वारश्रेर्महाजयाय नमः विजयाय नमः दक्षद्वारे द्वारश्रेर्मानन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रे बलान् प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रे कुमुदा कुमुदाक्षाय नमः मध्य नवरत्नकय सिंहासनो उपरि सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः पीठस्य दो भागे आधारशक्ते नमः कूर्माय नमः शिरदे सिंहासने आग्नेय कोणे कूर्माय नमः नैऋते कोणे ज्ञानाय नमः वायव्य कोणे वैराग्याय नमः ईशान्य कोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्व दिशे धर्माय नमः दक्षिण दिशे ज्ञानाय नमः पश्चिम दिशे वैराग्याय नमः दिशे ऐश्वर्याय नमः नैश्वर्याय नमः पीठमध्ये मूलाय नमः नालाय नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाय नमः संसत्ये नमः रम्रजसे नमः तं तपसे नमः सूर्यमंडलाधिपते विष्णवे नमः पशुपतिपते ईश्वराय नमः मध्यश्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः स्थापयामि चतुक्पालका इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैऋते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय मध्य सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अथ सत्यनारायण स्वामिनः प्राणप्रतिष्ठमहामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः ऋग्वेद सामवेद सुचन्दांसि राम बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठे विनियोगः रामङ्गुष्ठाभ्यां नमः ह्रों ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ सिकाय औषटे ह्रैं कवचाय हुं ह्रों नेत्राय औषटे अस्त्राय हुं पटे ॐ भूर्भुवस्सुवः इति दिग्बन्धः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ध्यायामि
ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् गौरी मीमायि सलीलानि नक्षत्या ष्पदे अष्टापदे नवपदे बभो वशे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन् उमामहेश्वराभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्ध्या उपमास्य विष्ठा सदश्चयो निमसतश्च विवः महादेव्यै च विद्महे वीणापाण्यै च धीमहि तन्नो वाग्देवी प्रचोदयात् ब्रह्म सरस्वत्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अर्घ्यपात्याचपनधूपदीप नैवेद्य स्थान ऊर्जे ददादना यो वश्यवदमो रसः उषतीरिपमातरः यस्य क्षयाय जिन्वथ ॐ ध्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते दधिक्रावण्णो अकार्षं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणायोगं सितारिषद मधुवादारदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः अबलायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वगुंहसः सहस्राक्षः सहस्रपाद अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् यद्भूतं यच्च भव्यम् यदन्नेनादिरोहति अधोज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः तदो शासनानशने अभि विराजो अधिपूरुषः पश्चाद्भूमिमधो पुरः देवायज्ञमदन्वता ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवायज्ञं दन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम् सम्यज्ञं वरेषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाः यजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञान् सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात्
सत्माहाधिज्ञा सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त ये केचो भयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदतुः कदिदाप्यकल्पयन् मुखङ्गमस्य कौबाहो काभूरोपादावुच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृतः भूरोदतस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासेदन्तरिक्ष शीर्ष्णोर्द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिति सस्तोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च दश्रः तमेवं विद्वान् अमृतयः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागुं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः सम्भूतः पृथिवीरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टाविदद्रूपमेदे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां वदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यो हातपदे यो देवानां पुरोहितः भूर्भूयो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये वृषं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे ददब्रुवन् यत्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वशे हेश्च च लक्ष्मेश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं अमं मनिषाणा ॐ शान्तिः 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 भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा सस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्त्रयुग्मानि समर्पयामि यज्ञोपवीदं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्ताद् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीदं बलमस्तु तेजः रूपाणि समर्पयामि गन्धान् श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यगन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यता गन्धान् धारयामि अक्षतारोहणान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरी गन्धर्वबोधाना
तामिहोपव्वये श्रियम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे शिवे सर्वार्थसाधके सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। सिन्दूरा समर्पयामि आभरणार्थ्यक्षता समर्पयामि पुष्पमालिकानि समर्पयामि अथ अङ्गपूजाः ॐ सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्बौ पूजयामि सत्यनदे नमः जानने पूजयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः जङ्गे पूजयामि सत्यदिशाय नमः ओरो पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यदेवाय नमः जगनं पूजयामि सत्यवर्माय नमः कटिं पूजयामि सत्योधराय नमोधरं पूजयामि सत्यहृदयां पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि सत्येष्ठाय नमः पुष्टदेहं पूजयामि सत्यपारायणान् स्कन्दौ पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहुं पूजयामि सत्यवक्षाय नमः हस्तान् पूजयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यदेवाय नमः वदनं पूजयामि सत्योच्युताय नासिकां पूजयामि सत्यधर्माय नमः स्तोत्राणि पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्राणि पूजयामि सत्यनन्दान् भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यवंशीललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपेण सर्व अङ्गानि पूजयामि अथ पुष्पपूजा करवेरपुष्पान् समर्पयामि जाजीपुष्पान् समर्पयामि चम्पकफलपुष्पान् समर्पयामि सपत्रकल्वारपुष्पं समर्पयामि शेवेन्तिका मल्लिका पुष्पान् समर्पयामि हिरवन्तिका गिरिकर्णिका पुष्पान् समर्पयामि हातसे पारिजातपुष्पं समर्पयामि पुन्नाकपुष्पं समर्पयामि कुन्दपुष्पाणि समर्पयामि मालतीपुष्पाणि समर्पयामि केतकीपुष्पाणि समर्पयामि मन्दारपुष्पाणि समर्पयामि पाटलीपुष्पाणि समर्पयामि अशोकपुष्पाणि समर्पयामि भोगपुष्पाणि समर्पयामि दाळिमापुत्रं पुष्पं देवदारु समर्पयामि सुगन्धराज कमलपुष्पाणि वेणुपुष्पाणि समर्पयामि तुलसीपत्राणि समर्पयामि जाजीपत्राणि समर्पयामि चम्पकपत्रं समर्पयामि बिल्वपत्रं समर्पयामि दूर्वयुगपत्राणि समर्पयामि शेवन्तिकपत्रं समर्पयामि मरुगपत्राणि समर्पयामि ओम सुगंधराजपत्रं समर्पयामि विष्णुकाजपत्रं समर्पयामि माचीपत्रं समर्पयामि मल्लिकापत्राणि समर्पयामि पारिजातपत्रं समर्पयामि दाळिमापत्रं समर्पयामि बद्रीपत्रं समर्पयामि देवतारपत्रं समर्पयामि शिमीपत्रं समर्पयामि ज्योतिपत्रं समर्पयामि कमलपत्रं समर्पयामि वटपत्रं कमलपत्रं रेणुपत्राणि समर्पयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संघर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षिताय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः भूपेन्द्राय नमः हरिये नमः श्रीकृष्णाय नमः सत्यनारायण देवता नाम पूजानि समर्पयामि महालक्ष्मी नमः कमलायै नमः पद्मासनाय नमः सोमाय नमः चण्डिकाय नमः अनघायै नमः रमाय नमः पीताम्बरधारण्ये नमः दिव्यगन्धानुलेपनाय नमः स्वरूपाय नमः रत्नदीप्ताय नमः वाञ्छितार्थप्रदायिन्ये नमः इंदिराय नमः कम्बुग्रीवाय नमः हरिप्रियाय नमः सुभदाय नमः लोकमात्रे नमः दैत्यदर्पसुराहरण्ये नमः सुरासुरपूजिताय श्री महालक्ष्मी नमः आवरण पूजां नारायणाय नराय अच्युताय आदिमध्याशून्याय विष्णवे हरये सृष्टिस्थितिसंहारकाय दामोदराय सत्यनारायण स्वामी देवता प्रथम आवरण पूजा समर्पयामि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद चंद्रांसि सूर्यमंडल सोमंडल सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः द्वितीय आवरण पूजा समर्पयामि केशव नारायण माधव गोविंद विष्णवे मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मामोदराय नमः तृतीयावरण पूजा समर्पयामि ओम सूर्याय नमः सोमाय नमः अंगारकान् बुधान् बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतवे नमः चतुरावरण पूजा समर्पयामि इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नैऋत्येन कुबेर ईशान चक्रराष्ट्रपालकाय नमः चतुरावरण पंचमावरण पूजा समर्पयामि मेषाय नमः वृषभान् मिथुनान् कटकान् सिंहान् कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ मीनाय नमः
सत्यनारायण देवता षष्ठवाहन पूजा समर्पयामि। ओम ब्राह्मे नमः महेश्वर्येण कौमार्येण वैष्णव्येण इन्द्राण्ये नमः वाराह्येन चामुण्ड्ये नमः दुर्गाय नमः। सत्यनारायण देवता सप्तवाहन पूजा समर्पयामि। मत्स्य कूर्मवराह नारसिंहाय वामनाय परशुरामाय रामा कृष्ण बुद्धा कल्किने सत्यनारायण अष्टभावन पूजानि समर्पयामि। कुलोधूपं दुगन्धं दुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् स्ववेदो भग्नन्निर्निर्ममा भजोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे नामानि कृत्वा विवदन् शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्च दशः नान्यः पन्था अयनाय विद्यते स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु महाराजाय नमः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक Pujariji, when should I start to read? Start right now? Chapter 1. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharishi Sutta, the narrator of the Purana, "O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharishi Sutta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth, and there he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found the Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gadha, and lotus in his 4 hands, and a garland round his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet." Lord Vishnu greeted him and asked, "Tell me what you want, and I will fulfill your wishes." Narada replied, "O Bhagwan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me
as to how they can be helped. The Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called SatyaNarayan Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life, and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed the Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. The Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read a story of the Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in the Kali Yuga. This puja can bring contentment. Maharishi Sutta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayan Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Lord Vishnu, who is the guise of it? Old man replied, O Brahman, Lord Satyanarayan grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satya. To the Brahman disappeared. The poor Brahman resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits and milk, curd and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayan's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta continued. One day when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayan Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin who had been bestowed with Lord Vishnu's grace spoke. This is called Satyanarayan Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayan in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour.
and performed the Satyanarayan Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayan's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Shri Satyanarayan Bhagavan ki jai. Chapter 3 Maharishi Suchi continued, O best of aesthetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by name of Ulgamuk. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day the royal couple was performing Satyanarayan Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got up, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly. O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata, and as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayan Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayan Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayan Puja, and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them, and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayan's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there
and stopped at a house where Satyanarayan Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayan Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayan Vrat herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayan warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered a great deal because of your faith. But now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. We have to do the other thing. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayan wanted to test Sadhu further. He took from an ascetic with a trident, appeared before Sadhu, and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that ascetic was indeed Lord Satyanarayan in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, you are thinking of stealing my things. We do not have any valuables in the boat except leaves and creepers plants." Whereupon Lord Satyanarayan replied, "O Sadhu, so be it. The God and the then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepers, plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu shone at the sight, but was rebuked by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of ascetic. He must be mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." Then two merchants went to seashore where the ascetic was meditating. They they fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahman and other devas down in your Maya cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown,
they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At the time, Lilavati and Kalavati were performing SatyaNarayan Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayan. He caused the he caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping all over, wonder-struck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayan's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayan Puja and prayed to Lord Satyanarayan again and again. At this Lord Satyanarayan, the savior of the sinners, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her house to see her husband, and daughter did not, and so I made him and both disappear. Let her go home and take the prasad and return. On hearing this, Kalabati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found her joy, her husband, and the boat. Then Sadhu returned home happily to his relatives, performed Satyanarayan Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Jai. Chapter 5. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tungadwaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana prasad. One day, after hunting, he was resting under a tree. The cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all of his sons and his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before the Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. So Maharishi Sutta said, O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to gratification of one's wishes. Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which Chaunaka and the other rishis returned to their respective places.
नमस्कार। सच्चित स्वरूप को नमस्कार। सबके आश्रय को नमस्कार। जग के कारण तारण स्वरूप उस लीलामय को नमस्कार। अध्यात्म तत्व को नमस्कार। जग के स्वामी को नमस्कार। सब और सनातन परम ब्रह्म अंतर्यामी को नमस्कार। हो शरण वरण के योग्य तुम्हें, जगपालन स्वयं प्रकाशमान। तुम करता भरता हरता हो तुम, निर्विकल निश्चल महान। तुम भय को भी भयकारी हो, भीषमता को भीषम महान। पावन के पावन करता हो, सब जीवों के गति और प्राण। हे प्रभु, तुम ही सर्वोत्तम पद के एक नियंता करनधार। रक्षक के भी रक्षक हो तुम, हो परे परे से भी अपार। हे प्रभु, आपका करते हैं हम भजन मनन चिंतन विचार। हे सब जग के साक्षी स्वरूप, हम करते तुमको नमस्कार। हे परम सत्य, हे सर्वेश्वर, हे पंत पाल अच्युत अपार। हम शरणागत हैं कृपा निधे, संसार सिंधु से करो पार। मेरे हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा स्वामी। धन बल विद्या हो देव देव, सर्व तुम ही अंतर्यामी। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की। सत्यनारायण स्वामी देवता पादांशनामार्चनं करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यभूताय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओम सत्यनिधे नमः। ओम सत्यसंभवाय नमः। ओम सत्यप्रभवे नमः। ओम सत्येश्वराय नमः। सत्यकर्मणे नमः। सत्यपवित्राय नमः। सत्यमंगलाय नमः। सत्यगर्भाय नमः। सत्यप्रजापतये नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यसिद्धाय नमः। ओम सत्य अच्युताय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। सत्यबोधाय नमः। सत्यधर्माय नमः। सत्याग्रजाय नमः। सत्यसंतुष्टाय नमः। सत्यवराहाय नमः। सत्यपारायणाय नमः। सत्यपूर्णाय नमः। सत्य औषधाय नमः। सत्यशाश्वताय नमः। सत्यप्रवर्धनाय नमः। सत्यप्रभवे नमः। सत्यज्येष्ठाय नमः। सत्यश्रेष्ठाय नमः। सत्यविक्रमणे नमः। सत्यधन्वने नमः। सत्यमेधाय नमः। सत्याधीशाय नमः। सत्यकृतवे नमः। सत्यकालाय नमः। सत्यवत्सलाय नमः। सत्यवसवे नमः। सत्यमेघाय नमः। सत्यरुद्राय नमः। सत्यब्रह्मणे नमः। सत्यमृताय नमः। सत्यवेदांगाय नमः। सत्यचरात्मने नमः। सत्यभोक्त्रे नमः। सत्युचे नमः। सत्यार्चिताय नमः। सत्येन्द्राय नमः। सत्यशंकराय नमः। सत्यस्वर्गाय नमः। सत्यनियमाय नमः। सत्यमेधाय नमः। सत्यवेद्याय नमः। सत्यप्रियायशाय नमः। सत्यमायाय नमः। सत्यमोहाय नमः। सत्यसुरानंदाय नमः। सत्यसागराय नमः। सत्यतपसे नमः। सत्यसिंहाय नमः। सत्यमृगाय नमः। सत्यलोकपालकाय नमः। सत्यस्थिताय नमः। सत्यदिक्पालकाय नमः। सत्यधनुर्धराय नमः। ओम सत्यभुजाय नमः। सत्यवाक्याय नमः। सत्यगुरवे नमः। सत्यन्यायाय नमः। सत्यसाक्षिणे नमः। सत्यसंवृताय नमः। सत्यसंप्रदाय नमः। सत्यमहर्षिये नमः। सत्यवायवे नमः। सत्यशिखराय नमः। सत्यानंदाय नमः। सत्यादिराजाय नमः। सत्यश्रीपादाय नमः। सत्यगुह्याय नमः। सत्योदराय नमः। सत्यहृदयाय नमः। सत्यकमलाय नमः। सत्यनालाय नमः। सत्यहस्ताय नमः। सत्यभावे नमः। सत्यमुखाय नमः। सत्यजिह्वाय नमः। सत्य औषधाय नमः। सत्यदुमिष्ट्राय नमः। सत्यनाशिकाय नमः। सत्यस्तोत्राय नमः। सत्यचक्षुषे नमः। सत्यशिरसे नमः। सत्यमुकुटाय नमः। सत्याम्बराय नमः। सत्यवर्णाय नमः। सत्यायुधाय नमः। सत्यश्रीवल्लभाय नमः। सत्यगुप्ताय नमः। सत्यपुष्कराय नमः। सत्यातीताय नमः। सत्यभामावतारकाय नमः। सत्यग्रहरूपिणे नमः। सत्यप्रहरणायुधाय नमः। सत्यनारायण स्वामी पादारविन्दोत्तर शतनामार्च्य समर्पयामि। समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। आगर्भवंशाभिवृद्धिः सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। एक भजन गाएगा।
रोज राज निज मन मुकुन सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धि धन जान के सिमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी भूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन विराज सुवेशा कांचन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यामान गुणे अति चातुर करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसी राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा धरि लंकन चुरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजे रघुपति की ने बहुत बड़ा तुम नाम प्रिय भरत संभाए सहस पदन तुम रोयस काम अस कैसे पति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद यम कुबेर दिक्पाल जागे कवि कवे सुखैवन दीना राम मिलाए राजपति दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना केश्वर में सब जग जाना युग सहस्त्र योजन जो भान लीन्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल्दी अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग सब पीड़ा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हार है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन पामे जन्म जन्म के दुख बिसरामे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरे से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो समिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होए जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मंदिरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुरभूप
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, संतन की जय। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमन। लक्ष्मी रमना स्वामी, लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, गंगा परिभाषे, ओम जय लक्ष्मी नमः। द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपद हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, संताल दीनी स्वामी, संताल दीनी। सो बल बोयो प्रभु जी, सो बल भोग्यो प्रभु जी, तेरे हस्त देखिनी।
ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण जन जन रूप धर्यो स्वामी जिन जिन रूप धर्यो रंगाधारण गिनी रंगाधारण गिनी दिन गोपाल सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करी मनवांचित फल देनो मनवांचित फल देनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदले फल मेवा स्वामी धूप दीप मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी। हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे बल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मोरक जल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपते केशवेद मिलो दया में केशवेद मिलो कृपामय तुमको मैं कृमति। ओम जय जगदीश हरे। हे नमंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ बढ़ाओ
अपने चरण लगाओ द्वार पड़ में तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण ओम जय जगदीश हरे त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव